Good evening, everyone. I'm Shiva, and today I will discuss about the historical background of the Constitution, what actually occurred in our past. So let's begin. I'm Shiva, and let's begin with first act, Regulating Act 1773. It was the first time British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. ऐसा पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द अफेयर्स है उनके अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू ट्रेड रिलेटेड टू पॉलिसी एवरीथिंग नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट they're controlling and regulating in the India before they were regulating in Britain, but after that in India during 1773 Regulation Act of 1773. Got it. For the first time, political and administration, it is still in the control of the British government over the company by acquiring function of company in India. So जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी अब वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे क्या किया उसने एडमिनिस्ट्रेशन पावर ले लिया, सब कुछ ले लिया उस टाइम। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस टाइम में क्या है कि गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, दैट इज कंसिडर्ड एज गवर्नर ऑफ बंगाल, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द 1773 नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया it is designated to the post of governor of bengal to governor general of india, that is a very higher post. And as you can see that on the picture, the first Governor General was Lord Warren Hastings. Oh, I made a mistake. That is Hastings, not a hosting. Okay, so I made a mistake. Sorry for that. So look at the photo of the Lord Warren Hastings. Next, establishment of Supreme Court of Calcutta, one Chief Justice and three other judges. There is also establishment of Supreme Court of Calcutta during that time, because before that there is no any Supreme Court. If I talk about, so including the three judges also come up with this under this act. Okay, the last one is this act prohibit servant of company from engaging in three any private trades. इसमें क्या था कि जो भी सर्वेंट थे कंपनी के वो पहले there are a lot of things they are involving in administrative function, political function. So now, because of this act, the prohibition of servant is prohibited. Okay, they are just engaged in their private trade instead of administrative trade. Okay, now later on, the once again the Chartered Act of 1773 is composed after 20 years. So in this act, after 20 years, given a more power to Governor General of Bengal. That time there was a severe power. Okay, there was a power. That's okay, 50-50. But in this act, after 20 years, Governor General of Bengal given a more powers. You can see on the picture, his Lord Cornwallis was the Governor General of Bengal in 1793. In this act, the power is more given by Governor General of Bengal. The extended trade monopoly for 20 years. In this act, the जो trade का monopoly था, actually what is monopoly exactly, we understand there is a one merchant, there is only one trader entire the region, as you can say that. So what happened actually in the east india company, so only one company from british they can trade. So in this act the monopoly continues for the next 20 years. It extended by the east india company because they are already in a power. नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रुपीस। अब हुआ क्या इसमें कि अब जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और स्टाफ थे उनको अब इंडियन रुपीस देना चालू कर दिया गया। दैट टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी उतने पावर में नहीं थी तो उस टाइम वो ब्रिटिश के ही पाउंड्स पाउंड्स उनको दिया जाता था। बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ बहुत सा पावर आ गई थी इनके पास तो उसकी वजह से अब इंडियन रुपीज़ उनको देना पड़ गया।
Commander Chief wasn't to be the member of the Governor General Council unless he appointed. देखो, कमांडर चीफ था क्या कि वो मेंबर नहीं था जनरल काउंसिल. Commander Chief, there was also high post, but however, there is nothing in a front of जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. हाँ, अगर गवर्नर जनरल बंगाल अगर उसको मेंबर बनाना चाहता है तो वो बन सकता है, बट विदाउट यू नो if he denied, for example, Governor General of Bengal denied, then he can't become Commander Chief. He can't become the member of government. Got it? That is the point. Next, Charter Act of 1813. So in this act, it abolished trade monopoly of the company in India. अब हुआ क्या कि पहला तो चार्टर एक्ट जो था स्पेशली फॉर ट्रेडिंग, तो पिछले एक्ट्स में हमने देखा 1793 एक्ट में हमने देखा कि जो कंपनी की मोनोपोली थी वो 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दी गई. बट इसमें क्या हुआ 1813 में मोनोपोली जो थी वो अबॉलिश ही कर दी. मतलब कि ब्रिटेन से अब हर कोई सी भी कंपनी आके अब यहाँ पर ट्रेड कर सकती है. दैट इज a huge loss for India, that India bears huge loss. So all the British merchants can trade here. अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट्स यहाँ पर ट्रेड कर सकता है. अब किसी को भी चार्टर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पूरी अबोलिश कर हो चुका है मोनोपोली. दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कंपनी थी उस टाइम. फिर भी चलो मान लिया कि एक ही कंपनी थी तो इतना और मतलब जितना और मतलब 100% एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ. बट आफ्टर दिस एवरीवन, हर कोई अगर ट्रेड कर सकता है यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. द सेकेंड थिंग, well, I made mistake once again. This is not a no. This is a now. Okay, this is a now. So I really apologize for that. This is now. Now Christians missionaries to come to India for the purpose of enlightenment to people. अब यहीं से क्या होता है कि क्रिश्चियंस मिशनरीज जो होते हैं the as you can see the Christian you know religious educator, now they are coming to India to influencing the Christianity religion, the imposing and their virtues and the rituals. They are, spreading the Christianity all over the people. So that is talking about. And the second thing is also from this Charter Act, the Western education and Western tradition is expanded during this act. Local government in India to impose tax on a person. Now, local government जो थी इंडिया की, local government means British government. अब वो in India to impose taxes on a person. No, I am a little bit confused. Maybe it's local government. No, it's not a British government. It's local government जो थी, local like Indian government in India to impose taxes on a person. अब लोगों पे taxes impose करने लगी थी. Taxes तो पहले से ही था वो तो, बट टैक्सेस यहाँ से इम्पोज कर दिया गया था. दे कुड ऑल्सो पनिश पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स. अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उनको फिर पनिश भी किया जाएगा. करेक्ट. दिस इज चार्टर एक्ट 1833. तो द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओह रियली. अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल था, पहले क्या था, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब फिर इस एक्ट में क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया. इंडिया, इसको वर्ड जोड़ दिया इंडिया. सो लॉर्ड विलियम बैंटिक was the first governor general of India. He became, you can see on the picture, the Lord William Banting was the first governor general of India, and for the first time, governor general of India having authority over the entire territory area supposed by British, proposed by British. Anyone. ऐसा हुआ कि जितनी भी अथॉरिटी थी इस एक्ट में, क्या हुआ कि जितनी भी टेरिटोरियल एरिया थे इंडिया के, वो फुल्ली ब्रिटिश के अंडर हो चुके थे. मतलब उनके पास पूरा अथॉरिटी थी कि पूरे इंडिया को कैसे भी करके हम चला सके, जो भी एरिया था पूरा. ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि ट्रेडिंग बॉडी थी, अब यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी. ठीक है, दैट इज थिंग. थैंक यू सो मच फॉर listening. Yeah, I know I made some mistakes, so please clarify.